आप सबकी सूचनार्थ निवेदन करूं कि भास्कर जी बहुत ही एक्टिव एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और राज सूक्ष्म और तीक्ष्ण दृष्टि रखने वाले हैं। घटनाओं को निष्पक्ष और स्वतंत्र जर्नलिस्ट के रूप में आपने काम किया है। आज भी आप एक जर्नलिस्ट के रूप में मुख्य भूमिका निभाते हैं। मैं राजीव गांधी चेयर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर कुंभ स्नान के लिए आए थे। हम लोग सोचा कि सर की उसका वाक्पटुता का और उनकी इंटेलिजेंस का हम लोग यहाँ सदुपयोग करें, अपने विभिन्न विद्यार्थियों से शोधार्थियों से इंटरेक्शन कराएं एक छोटा सा, जिसके माध्यम से हम लोग भी लाभान्वित हो सके। डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी भी हम लोग के पीछे मौजूद हैं। आपका संबंध निरंतर वर्षों तक जीएनयू से रहा है। आपने डीफिल वहीं से किया है, इसके अलावा आपने पीडीएफ भी वहीं से की है। सोशल एक्टिविस्ट है और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं और बड़ा स्वतंत्र और तीक्ष्ण विश्लेषण भी करते हैं। मैं आपका भी राजीव गांधी जी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग जिस प्रकार का स्वागत और जिस प्रकार से सारी औपचारिकताएं पूरी होनी चाहिए वो नहीं कर पाए। नहीं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर, विशेष रूप से प्रमोद जी हम लोग तो अक्सर मिलते रहते हैं, तो इसलिए जी तो आता रहता हूँ। सर जो आप लोगों से इंटरेक्शन करेंगे उसका विषय बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारतीय गणतंत्र में उत्तर दक्षिण के बीच किस प्रकार से सामंजस्य की स्थापना की जाए, कौन कौन से मेजर्स को अडॉप्ट किया जाए, उस पर मैं चर्चा करेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि पहले वे अपनी बात रखेंगे, उसके बाद में चूँकि आप सब लोग शोधार्थी हैं और आपका संबंध नई बातों से है, तो जो आपकी समस्याएं होंगी, जो आपके संदेह होंगे, उसके बारे में सर से प्रश्न करेंगे। मैं भी बहुत कुछ प्रश्न करना चाहूँगा, तो हम निश्चित रूप से हम लोग लाभान्वित होंगे। एक बार सर पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मैं अधिक उल्लास नहीं करूँगा आपके भाषण में अपने विद्यार्थियों को करने के लिए, तो आपसे सादर अनुरोध है। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक बार इंट्रोडक्शन सब लोग कर लें, तो जो भी लिंक योग है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर मैं डॉक्टर नीलू झा, यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट राजीव गांधी चेयर। जी, अभी सर आपका एक आर्टिकल जो है वो न्यूक्लियर लायबिलिटी के ऊपर सेज ने जो आईआईटी है उसको प्रकाशित कर रहा है, इसकी एक्सेप्टेंस आई है। बड़ा नाम है और इन्होंने कई किताबें लिखी हैं और राजीव गांधी चेयर में लंबे अरसे से बहुत एकेडमिकली इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं प्रभात कुमार सिंह, रिसर्च स्कॉलर हूँ। ह्यूमन राइट में मेरा जो रिसर्च चल रहा है, रिसर्च के लिए। प्रभात कुमार सिंह फ्रॉम नेटिव, यही यूपी का हूँ। अम्बेडकर नगर, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर। अच्छा, अम्बेडकर नगर ये लखनऊ के पास है ना? ऐसा फैजाबाद से फैजाबाद 15 जिले बहन जी ने बनाई, तो बड़ा उसमें to come nearer to you, I am asking you. हमको भी कंफ्यूजन होता है। तिवारी जी आपसे हम सब लोग परिचित हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारे विद्यार्थी परिचित हो। मैं राजीव तिवारी, विश्व दीपक जानते होंगे आप लोग, मेरे बड़े भाई सर के साथ में लगाया गया है कि आप देखिए। सर मैं डॉक्टर उदय पॉलिटिकल साइंस और सर के विषय में मैंने शोध कार्य किया। आपका पूरा नाम? डॉक्टर उदय भानु? उदय भान। ये सर ये सर बड़े आउटस्टैंडिंग ये विद्यार्थी हैं और पिछले कई वर्षों से हमारे यहाँ ये गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाना एलिजिबिलिटी अच्छे तरीके से मैं सर धीरेन्द्र कुमार सिंह, मेरा रिसर्च टॉपिक है इंडो जापान रिसर्च इन 21st सेंचुरी। सर के निर्देशन में 3 साल हो गए हैं, मैं चित्रकूट से हूँ।
ये सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमारे सारे बच्चे बैठ रहे थे और ये लोग क्वालिफाई करते थे। तो कई बार अगर दूसरी स्टेट होती है तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हो जाता है, बट ऑल ऑफ देम आर फर्स्ट क्लास, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, और बहुत अच्छा कैरियर उन लोगों का है। आप जब बात करें तो आपको देखेंगे ये हम विष्णु कुमार पांडे और मेरा टॉपिक है हिंद प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में भारत जापान संबंध। लेटेस्ट नेटिव कहाँ जिला कौन सा था? इलाहाबाद। हाँ चलो कल नेटिव यस प्रॉपर अलाहाबाद। यस यस नवीन। मेरा नाम नवीन सिंह है। हिंद महासागर में भारत अमेरिका संबंध चीन के बढ़ते प्रभाव के विशेष संदर्भ सर के अंडर में ही है। इलाहाबाद मेरा प्रॉपर। मेरा नाम है और मेरा टॉपिक है सर भारत में जनमत निर्माण के संदर्भ में मीडिया की भूमिका 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में। और सर मैं कौसाम्बी से बिलोंग करती हूँ, रहती पर इलाहाबाद में। सर का आप मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा, और सर का कुछ संबंध जो है वो इसमें मीडिया संबंधित है ना, तो सर को थोड़ा परेशान कीजिए, सर बहुत गाइड करेंगे। राइट। सर मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है और मैं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाती हूँ, साथ ही निर्देशक भी हूँ। मेरा टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर कोरिया के मध्य तनाव के बीच राजनीति को प्रभाव का मूल्यांकन। लेटेस्ट टॉपिक सर आपने बहुत अच्छा है। और मैं गाजीपुर से कब से आप इसी साल से। कंफर्म हो गया आपका? अभी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही है। हाउ इट इज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड। सर इसमें सजवा आप यही करते हैं हाँ ये करते हैं, बैंक वाला का हक है। मैं दोबारा कर दूँ। Have you started your hypothesis, synopsis, or any cataloging of your reference books and all that? You are native now? गाजीपुर कोई दिक्कत नहीं, वही इतना समझदार होते हैं क्या मुझे पता है कि ये थोड़ा ये नया जिले बनाने की वजह से अभी इतना ट्रेंड बाउंड्री से ट्रेंड बना। अभी सर डिस्ट्रिक्ट One. कितना है? 75 है। सर मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। सर मैं 21st सेंचुरी के संदर्भ में महात्मा गांधी के विचारों का पर्यावरण के संदर्भ में क्या उपयोग किया जा सकता है, सर उसकी मेरा रिसर्च टॉपिक है और सर कहने वालों से रिसर्च चल रहा है। आज सर एक अखबार में है, ये शायद तुषार गांधी जी का एक आर्टिकल है, and Tushar says that now the intellectuals have made Gandhi very complicated, especially his philosophy and his writings. तो मुझे लग रहा है कि इनका कंट्रीब्यूशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनके संदर्भ में है। You are native of? जी सर मैं सीतापुर से रहता हूँ। सीतापुर। सर मेरा नाम संजय सिंह पटेल है और मेरा टॉपिक है पर्यावरणीय समस्याओं के परिदृश्य में बौद्ध सिद्धांतों की प्रासंगिकता। और मैं बांदा का रहने वाला हूँ। मुझे दरअसल संगोष्ठियों में सम्मिलित होना ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे मित्र संदीप जी ने बताया तो मैं यहाँ। बहुत अच्छा, वेलकम। कौन है बेटा आपके गाइड? सर अभी हमें अभी अलॉट नहीं, ठीक है, वेलकम। सर के बारे में कुछ मैं जो लेट कमर्स हैं वो बता दूं कि सर मुख्य रूप से जर्नलिस्ट है और अभी हाल ही में राज्यसभा की सदस्यता से आपने अवकाश ग्रहण किया है। 6 वर्षों तक राज्यसभा में सदस्य रहे थे। आंध्र प्रदेश से आप इलेक्ट हुए थे राज्यसभा के लिए, लेकिन जब स्प्लिट हुआ तो तेलंगाना आपको अलॉट किया गया। सर तो रूल रेगुलेशन कुछ है? Friends, young friends, I am new to Triveni Sangam, but I am not new to Ganga Jamuna Kaiti. Professor Harikumar Sharma ji, Dr. Meenu Jaji, Dr. Pramod Sharma ji, my brother Rajiv Tiwari, and the associates of RajivGandhi chair, which is having vision
to focus on secularism and Indian social justice besides the international nuclear disarmament. Today, January 30, the day to recollect the passing of the beacon, the light, from the midst of 1948 generation, and to recollect our connect with those generations and reconnect to the latest circumstances. Prayagraj, which is Indian heritage, भारतीय इतिहास की महान दार्शनिक प्रस्थान, गंगा यमुना सरस्वती की महान संगम, अल्लाह जुबान से इलाहाबाद रूप में प्रतिष्ठित होने के बाद हम भारतीय होने के नाते प्रयागराज से भी गर्व लेते हैं, इलाहाबाद से भी जोड़ते हैं. This is such a place which I need not put before you, but for my fondness of the value of this soil, may I call the center of constructive federalism. As Vishwadeepak Tripathi discussed with Professor Sharma ji, and as I planned to travel here, accommodated to have Kumbh Snan or Jnan Snan, I value your presence as the Ganga. Let us assimilate and move forward. Today, where we are standing. First, before entering into my subject, I am Ananda Bhaskar Rapolu, son of Warangal district of Telangana, the original strength of the movement which achieved separate state, which is having its own emotional, geographical boundary, sustained all along for 60 long years of its merger into British ruled Madras presidency's Andhra state. That's why I am connected with Ganga Jamuna Tehji. Today, we the people of Telangana have proven that though in minority, we can achieve the justifiable, constitutional, democratic, republican urge. Ours is a success story.
I entered into upper house of Indian Parliament in 2012, being the protagonist in the forefront of the agitation and movement. My choosing and putting into upper house of Indian Parliament by the then ruling party has raised the eyebrows. This is a reflection of the thought process of the ruling party towards the democratic urge of the minority in space, minority in land, minority in population, minority in convincing the authority. And it is my thorough satisfaction, being the son of the soil, in my term of upper house itself, I could not only represent the then United State of Andhra Pradesh, but also newly bifurcated, long existing Telangana state, while having friendship, affinity, brotherhood and bond with my Telugu brethren of Andhra Pradesh. We carry harmony. Let me put forth a few points which I am trying to spread across. How this Indian Republic is. Are we success as a republic? Since we are successful as democracy, as we have proven our constitutionality, and we have proven our Indian Constitution's relevance even after its adoption way back 1950. The world has convinced that India can perfectly exist in its diversities. How come this beautiful Indian Republic, with all its exigencies and conflict-like situations, becoming economic power, political harmonious administrative visionary location, while several nations are facing such complications to relook into their frame of administration, civility, and their social priorities. Let me touch one thing, Professor Sir. The Indianness in its Sanatan form and to the up-to-date advanced modernity, perfect federal establishment. Ajam nija paroveta ganna chetasam udara charitanantu vasudaiva kutumbakam. We are not blindly preaching. Our boundaries are unknown to our senior-most citizens of this part and that part. Take all corners of our country, you will find lakhs and lakhs of citizens, those who have not traveled in their lifetime to the other side of the nation, not at all having any exposure, any understanding of the way of life
either in political frame or in social frame or even in economic administrative frame. But we feel proud to be Indian, Indian, Indian. How it's happening? How it's happening? This is the place of Maharshi Bharadwaja. What he has taught. This is the place from where the revolutionary fire has exploded in several shapes, not only in the shape of Shahid Chandrasekhar Azad. This is the place of Kabir Das. This is the place of Sant Ravidas. मन चंगा कटोरे में गंगा. गंगा मैया का बगल में बैठते हुए मन चंगा कटोरे में गंगा बोल के हिम्मत से जीने वाला संत रविदास जी का, कबीरदास जी का, इसमें से आज क्या ढूंढ लेना है? इतना जरूरी है क्या? इतना हाई क्लास हाई प्रोफाइल डिस्कशन में उतना पुराना पुराना सनातन नामों का गणने का जरूरत है क्या? कुछ भी सकते हैं. वहां से ही फेडरलिज्म फ्रेम हुआ है. मेरा आर्ग्यूमेंट ये है. This is where we are exactly imbibed. The travel of Maharshi Agastya, the present day historians in their own frame, sorry to say, might have made it into mythology, since we didn't have Dr. Minuja, the ephemerical, scientific ephemerical historical database, but it is having the bond in South India. We are bonded in such a way. Ours is a multicultural society. What's happening in India today? Reculturalization of each and every way of life. That is the essence. That is the real panacea. That is the medicine with which we are, even for the future, we are getting ready to sustain. If you go to Tripura, you will feel so deeply engrossed. My Indianness is so rich here. If you travel to Vadnagar, Dwaraka, nearby Ahmedabad and all other parts, Kutch, Bhuj, and even up to beyond, those are not in our limits as the boundary today. We will see the Indianness, the beauty of Indianness. Why it bonded so deeply? This is not only just from north to south. The latest dharmic ityas of, say, more than 1000 years mentions about the beauty of work of Adi Shankaracharya. Wherever you go to Srinagar, you go to Jyotirmath, you go to Kedarnath, you go to any location. The footprint, the imprint of Adi Shankaracharya has established the federal structure. Until and unless we deeply, scientifically analyze the very great impact of
such deepened way of assimilation, we cannot understand the present day federal structure of Indian Republic. From where now I am starting to come to your issue, which may snowball into a complication, and if it is safely, carefully handled, can also spread the fragrance of Indian Republic foundation. What's happening to the Indian Republic today? The 15th Finance Commission is dreaded with the anomaly of the terms of reference. Your brothers and sisters in southern parts are feeling bad. They are worried for our discipline, for our social, family, economic discipline. If we are to be punished, what type of education we will record? This is the major contention which is growing. I have mentioned about the flow of north to south and south to north. I mentioned that that is the wonderful foundation which will always yield some positive support to our Indian federality. And at the same time, present day complication, I am warning that it may snowball into a greater complication. How to look at it? Yes, population wise, electorate, number wise, the setting of constituencies of Indian Parliament's lower house. We have our benefit of administrative facility, but that facility shall always be harmonious, assimilative. It must spread the scope for inclusion, not for exclusion. What's happening now? Since your chair is also having the priority of nation building, Indian Republic, the South-North contentions and the growing complications towards the Republic's constitution. Our veterans in economics, in anthropology, in sociology, besides political science and public administration, have looked at the post-independent India up to 1988 in three different phases. 1948 to 47, 48 to 67, 68. Then on 72, 78, crumblings, new formations, new reinforcements of political organizations, and then on the experiments of federalism within the political arrangement.
Politician is the person who will grab the each and every opportunity to learn the extraordinary dangerous science and convert into their own language, words, phraseology, and to reply back and revert back. You scientists of the society, through your chosen angles and sectors and studies, shall also look to them how greatly they are getting adopted. Then your science will be having much more standard deepening. You can synthesize how we shall look now. I have mentioned about those three phases. Today, how to look at what happened in 1990s, what happened between 2000 and 2004 and 2004 and 2009, 2014, and what was the mandate of 2014. Pure scientific angle. You all know that I am a colored fellow. I have my own political alienation. But my words are not at all having any resemblance of my background, my leanings, my affiliations. The dispassionate scientific outlook towards the problem will start yielding us for a very good answer to the growing complication. This is what I wanted to first emphasize with you all. For that, what we need to do? How the political realignment is going on? And is that administrative and economic realignment are in consonance with those political realignments? When they are not having the harmony of these 3-4 sectors, the contention will sustain. This is where we need to once again connect with our unity in the diversity. The global scientists of economics, of sociology, or of political science analyzed our Indian Republic and its setting. Since India is centralized society, mostly the centralized society, the federalism is sustaining. We are not ready blindly to accept that. That is also a factor, one of the factors, but that is not the totality of the factor. We have togetherness. We feel to be united. We have the basis of connect through our soil, through our water, through our way of life. Unexplainable, the so-called mythological affirmations, and with so many diversities of practices of beliefs. Is in such condition, why this question mark of South-North contention evolving into a conflict, complication?
This is where we need to focus, not only in Allahabad, the center of federalism, during our pre-independence days. Several leaders of several lines of thought process used to have the Sangam here. At the same time, today, political class are getting adopted with those requirements, but administrative level contentions are being just kept like that. For this, your thought process will add to the harmony to be evolved around the nation building. Ours not just centralized society. Yes, it looks administration either in the state, even if you take at block level or district level, leave alone the nation aside, you will find some sort of centralization. Why we are accepting that? For the benefit of smooth passage of the delivery of intended results, benefits, fruits, we are allowing it. Likewise, at the union government level, you may be changing certain nomenclature of certain institutions, certain setups, but the major thrust is being sustained. Whenever there is excessive centralization, subsequent correctional mechanism is also flowing. The daughter of Allahabad, Indira Gandhi, who was blamed for the imposition of emergency, was the first person to accept or misstep profusely. She has so broadly, gladly, graciously, knowing to total world, offered her understanding and apology and gained her mandate back. Why I am bringing this political point into our understanding? With that, she has gained the appreciation and confidence. Confidence is the most essential point to rule out these slight conflicts, complications. If that is in distant show, this conflict will go on. As federalism, which is very important factor for our south-north affinity to sustain the idea that is India. Before the globe,
there shall not be any confusion in the confidence of the people of all across all the states of the country. Then is there any deficiency of confidence? Yes. With my practical understanding, during these contemporary times, there is visible deficiency of confidence from certain states, particularly from south and northeast, that they are being treated stepmotherly. If that is corrected, for the correction, what we are doing today in northeast, wherever you travel around, be it Arunachal Pradesh, be it Mizoram, be it Meghalaya, be it Nagaland and Assam, there was great assimilation into the Indian thought. But all of a sudden now another complication in the shape of we, the people of India, as the citizens, becoming a question. Will it snowball into a complication? We need guidance from you, researchers. Analyze. Those you might have chosen your topics in such a way to attain your award and to decorate your prefix. But at the same time, this is also a bounden duty as the enlightened citizen of the nation. What is your guidance? Why Kerala is talking in different tone? Why Tamil Nadu is waking up in different way? What happened between these states of Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana? These questions have to be imbibed into the frame of confidence. Then only the we feeling will sustain. Since we have the depth of way of life, anthropologically, sociologically, culturally, socially, and economically, besides politically, as a citizen of India, throughout the nation, the bedrock of the federal structure of the Indian Republic is sound, but structures shall never look shaky. There needs to be a correctional mechanism for which we need to try to focus our thought process and put forth certain hypotheses to formulate into solutions. With this plea, let me wind up my submission to you and one another fresh submission. This is more than century old university. I come from such a land from where it is also having a century old university. Ours are the centers of knowledge. Times immemorial. We have richness of learning, innovation, depth of research. But these days, the quality of research and the employability of the education became big question mark. Higher learning institutions are such where each and every individual shall commit to have their work to be focused in the global plane. Take the example of Dr. Minuja. Move forward global. Wish you all the best. God bless.